अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना पहचाना, अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। टिन टिन टिन। Welcome to another retro night. This is the year 1997. Can you believe the 90s are now retro? Yeah, it seems like just the other day, but no, it's been a while. This movie was quintessential Yash Chopra. This was the first time he did a full-on musical, एक theatrical background की ये movie थी जिसमें एक fairy tale कहानी है. Fairy tale कहानी play करते करते these three individuals come together. कैसे उनकी real life affect होती है, कैसे इनकी theatrical life affect होती है. This is what the movie is about. The movie has amazing actors, Shah Rukh, Madhuri, Karisma, and a special appearance by Akshay. I'm Madhuri, Priya is Karisma, and you are Shah Rukh. I'm Karisma too. दिल तो पागल है is one of my all-time favorite movies. ये movies मैंने इतनी बार देखी है, हर एक dialogue, हर एक scene मुझे याद है. यहाँ तक उन्होंने कपड़े क्या पहने थे, hair style कैसे था. हम इतनी movies देखते नहीं थे in theaters growing up in the 90s. लेकिन this movie, Priya and I went to go see in the theaters. And it was such an amazing experience. हमें याद है, हम हंसे, हम रोए, हम नाचे, हम गाए इस मूवी के साथ क्योंकि हम retro night कर रहे हैं. I thought, why not talk about Dil To Pagal Hai? Because what is a more iconic movie from the year 97 than Dil To Pagal Hai? Childhood memories में से I think Dil To Pagal Hai is probably the first movie जिसको देख के you kind of have a feeling of romance as a young girl growing up. हाय, हमको राहुल चाहिए था अपनी लाइफ में, you know. I just wanted to be Nisha. That's all. Really? See, I never wanted to be Nisha. मुझे पूजा ही बनना था. एक तो maybe Madhuri तो मैं biased हूँ. I 100% I am a Madhuri stan. For me, there's no one bigger and better than Madhuri. So maybe because Madhuri ने पूजा character play किया था, and yeah, maybe पूजा को राहुल मिलता है. So I wanted to be Pooja. Classic, Sharmili, beautiful, dancer, lost in her own world. मुझे लगता था कि मैं भी ऐसी हूँ. Pre-teen years, सब अपने आप को एक माया समझती है, or you hope कोई राजकुमार आएगा, शादी करेंगे, प्यार करेगा. So you have that connection as a young girl. कभी मैंने निशा नहीं बनना था, not because निशा में कोई problem थी, but you connect with Maya. Fairy tales में हमेशा princess को prince मिलता है ना, और इस मूवी में पूजा को राहुल मिला, and वो भी जब dream sequence में जाती है, एक घोड़ा आता है and a man goes past her, you know, and grabs her dupatta, and I was like, I want that to happen to me. Acha, why I resonate with Nisha basically because I'm into dancing, and that was the time जब करिश्मा कपूर अपने पीक पे जा रही थी in 1997 after राजा हिंदुस्तानी. जब उसका teaser release हुआ था ना, there was this Madhuri in this pose, then there is this Shah Rukh in this pose, ऊपर से spotlight गिरी है, and then there is Karisma in that pose. जब movie आई, what I found beautiful about it, it's not only about love, it's about the relationships and the beauty of it. वो friendships हो, आपका best friend हो, आपको लगता है कि आपका best friend आपका life partner बन सकता है, आपको अपने दोस्त से प्यार भी होता है. ये जो school of thought था, ये मुझे इतना पसंद आया with the backdrop of dancing, especially Shiamak Davar. So for me, dance is also a big thing. I have been a dancer since childhood. और मुझे था जब मैं माधुरी को देखती हूँ, मेरे लिए माधुरी से better कोई dancer है नहीं. उनके expressions, and मैंने हमेशा ना माधुरी को copy करने की कोशिश की है. When the movie started, वहीं से I was in love with it. एक दूसरे के वास्ते एक गाना शुरू होता है, and उसमें couples दिखाते हैं, हर एज के couple, elderly, middle aged, young, husband wife, boyfriend girlfriend, hug करते हैं, kiss करते हैं. जब मैं छोटी थी, I didn't realize aside from Yash Chopra कि ये सब related है किसी ना किसी चीज से, from the film industry या from the movie itself. आदित्य चोपड़ा भी था उसमें, हीरो and यश जौहर भी थे उसमें, and वो couples दिखाते थे. फिर दिखाते थे Madhuri and Shah Rukh को. Madhuri playing her Pooja character, Shah Rukh playing his Rahul character. You know, he's getting ready, she's doing her dance, stretching. उस गाने में इतनी simplicity थी ना. एक तो लता मंगेशकर की words, एक तो हरिहरन. He's an amazing singer. उनकी जो duet आई, cut to
You go from that simplistic song to मुझको हुई ना खबर, Diva. चोरी चोरी छुप छुप कर, हाय एंट्री हो तो ऐसी हो. Karisma looked like a full-blown star. Yeah. And Phoebe, because she was the lead actress in this dance troupe, वो dance भी करती थी, expressions भी देती थी, she was killing it. Or Shiamak Davar's choreography is iconic. You know what? Karisma was looking so sexy. एक उसका change आया costume का. She's wearing white leotard with cutouts everywhere. Damn! Cut to this black, like sports jacket, and her hair is flying. Like, damn, girl, you're killing it. Karisma Kapoor at that point was one of the leads in the industry, and she is a good dancer. Obviously, agar Madhuri and usko compare karo, they have different fortes and their different strengths. But Karisma Kapoor is a solid dancer. She had a very good sequence. Her costumes were very nice. This blue halter top. Oof. Jumper, blue jumper. Jumper, right? And she had those killer heels. And the behind the scenes where they show baad mein ki wo dono, like Rahul and her kind of like bickering at each other. And she waited for him to come on the stage at the end with silver mini skirt tee. And she had the mic thing on her. And she's like doing like this and looking on the side. Rahul kahan gaya? He jumps up and lands on the stage. And that was just like a power moment. Okay, hero entry. Hero aa gaya. That was the Krishna had her moment. That and was then the Shah Rukh had his moment. And the music, the dancing, the choreography, the lyrics of that song are very catchy. Like, stage phar performance aati hai heroine ki. She was extremely sexy. Shiamak Davar choreography ho, aap paas Uttam Singh ji ka music ho, Asha Bhosle ki voice ho, it can never go wrong. वो जो mirror effect वाला portion आता है, एक step मुझे आज तक याद है. I was Karisma thoroughly. Her entry, her exit, damn. She was exuding so much power in that entire song. जब मैं छोटी थी मुझे समझ नहीं इतना आया कि why is she being so bitchy, ये अपना diva attitude क्यों दिखा रही है राहुल को. हाँ थोड़ा लेट हो गया उसने जब हाथ extend किया ये क्यों नहीं हाथ अपना दे रही. Then as I grew up I realized damn that's power क्योंकि this a song that whole interaction उनकी ना relationship set करता है कि वो ये इतने close हैं, they still get on each other's nerves and they still pick on each other. राहुल announce कर देता है कि वो 3 महीने बाद एक show करेगा called Maya. सब जानना चाहते हैं कि अच्छा शो तो अनाउंस कर दिया लेकिन करेंगे क्या. तो वो ना रिसाइट करता है कि माया एक ऐसी लड़की है जो अपने ख्वाबों से बाहर नहीं आती, लहराती है. एंड देन you see Madhuri, she's running in the field, simple suit, nothing on it, simple, and you just see her gracefully. It goes like this too, and I was like, you जब वो माया की बात कर रहा था, चंचल, sweet, खोई हुई, and Madhuri के expressions आ रहे थे for each bit. मैंने कहा, oh my god, I'm in love. And Madhuri is a beauty, but वो जो scene था ना, greenery around her, beautiful. And फिर वहां से शाहरुख को कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता. They're fed up and they leave. वो वहां अकेले ख्वाबों में लॉस्ट है, वहां माधुरी ऐसे ख्वाबों में देख रही है, और फिर वो कहता माया, और वो कहती हाँ, like किसी ने बुलाया उसको. She is living with her friend's parents, उसके parents गुजर जाते हैं. This uncle and auntie love her, cherish her. उनका जो interaction है घर का कितना cute है कि जो uncle है वो अपनी दुनिया में मस्त है कि मैं singer हूँ, and उसकी wife कैसे ताने मारती है कि singer जी कुछ घर के काम भी होने दो. तो ये मस्ती वाला माहौल जो होता है हर घर में वो भी देखने को मिला, क्योंकि it's about relationships. फ्रेंडशिप दिखाई है इस मूवी में कि फ्रेंडशिप्स में अप्स एंड डाउन्स कैसे हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, पर दिल भी कैसे दुखता है जब one starts feeling something else and the other doesn't. Then it shows love. प्यार कैसे होता है, कैसे एक दूसरे के लिए फील करते हो, और प्यार होता है तो do you sacrifice other people for that love, or do you sacrifice your love for your loved ones? And ये भी मूवी में बहुत अच्छी तरह दिखाया. Then they show how maybe because someone did such a big thing in your life, do you owe them for the rest of your life? So these are really interesting concepts that are explored in this movie throughout the different songs, throughout the different scenes. And I think it's a really lovely कहानी. आज तक मुझे वो कहानी resonate होती है क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल जैसे लोग हैं अभी भी, पूजा जैसी लड़कियां हैं जो अपनी ख्वाबों में रहती हैं, जो who just love, and then निशा जैसी भी लड़कियां हैं जो प्यार भी करती हैं
दोस्ती भी निभाती हैं, अपने लिए स्टैंड भी लेती हैं. This was a powerful female character, but not just Nisha. Pooja was equally powerful in her own way. क्योंकि निशा को थोड़ा मॉडर्न दिखाया, पूजा का थोड़ा ट्रेडिशनल दिखाया, लेकिन दोनों अपनी जगह एक को टक्कर दे रही थी. एंड राहुल को भी ना, आई थिंक ही वाज स्ट्रांग, लेकिन राहुल के कैरेक्टर के आगे निशा एंड पूजा वर मच स्ट्रॉन्गर. When that sequence that you mentioned, हमें फिक्शन रियलिटी में कैसे बदलती है वो दिखाया गया कि जहां पे वो अपनी स्टोरी दिखा रहा है, वहां पे एक माया जो है पूजा की शक्ल में मोरनी की तरह बागों में घूमती फिरी. इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड येट यू वर राइट कि एक वो लड़की जो इंट्रोवर्ट है, एक ऐसी लड़की जो अपने आप में रहती है, प्यार करती है, फैमिली ओरिएंटेड है, डांसर है, सब कुछ है. हर कैरेक्टर को सेट किया जाता है. द फैमिली यू मेंशन्ड, दैट अंकल आंटी, वो हमारे सामने रियल कैरेक्टर्स बन के आ जाते हैं. एंड व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट कि जो निशा का कैरेक्टर था, जहां पे हम दोस्ती की बात करते हैं कि क्या आप अपने प्यार को त्यागेंगे अपने प्यार के लिए. आई थिंक यू फाइंड हैप्पीनेस व्हेन यू गिव हैप्पीनेस टू द वन दैट यू वांट टू बी हैप्पी विद. और वो चीज निशा के कैरेक्टर ने बड़े ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया. निशा आज की लड़की दिखाई जाती है, कंपेटिटिव है, जो कॉम्पिटेंट अपने काम के अंदर, कि उसको पता है उससे बढ़िया डांसर तो हो ही नहीं सकती है, इसकी माया तो मैं ही हूँ. और वहां से ये मूवी कैसे टेक ऑफ करती है, वो 3 महीने की तैयारी चल पड़ती है. देयर वाज दिस सीक्वेंस जहां पे ही इज डूइंग दिस ड्रम थिंग एंड शी इज डांसिंग टक 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 टक, एंड सडनली व्हेन शी हैज दिस accident, when she injured her knee and she hospitalized, and now they are in the fix, and then he come across this beautiful dancer who is doing Kathak, who is doing classical. That entire sequence जहां पे आपको गूज बम्स आते हैं, आपको सडनली कंटेम्पररी मॉडर्न डांसिंग से सडनली आपको रियलिटी आता है कि यस यू आर हिंदुस्तानी, दिस इज द इंडियन ब्यूटी. एंड राहुल इज सो लॉस्ट कि ये मेरी माया है. जब ये सीक्वेंस हुआ था, when शाहरुख is playing his drums, राहुल आता है, he's like, oh my god, ये क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. वो ड्रम सीक्वेंस करता है, and then you hear Kathak happening, the घुंघरू. I was like, oh my god, so mesmerizing Madhuri was. मैं जब भी वो सीक्वेंस देखती हूँ ना, मैं अपने आप को थोड़ा सा कोसती हूँ कि मैंने कथक क्यों नहीं सीखा, है ना. इतनी ब्यूटी, इतनी ग्रेस थी, एंड आई वाज लाइक शिट यार, दिस इज माया. उस गाने पे ना म्यूजिक ही था, there's no words, but हर बीट पकड़ी उसने. And I remember where she does that like butterfly thing. This is the first time, कि जहाँ पे हमें ये पता चलता है, ये होता है. So Odi, you were saying कि Nisha is a very strong, independent character, but एक scene movie में है the Valentine's Day shopping, जहाँ पे Madhuri Dixit is shopping and her friend is there, and the friend is like, why are you shopping? Valentine's Day, and she's like, अपने आप को खुश करने के लिए खुद ही चीजें ले. Yes. So that's also a depiction of a strong woman. कि you're not waiting on Valentine's Day for some man to buy you flowers and teddy bears and all this. कि वो अपने लिए कर रही है ना, अपनी खुशी के लिए कर रही है. That also shows a beautiful side of Maya, कि she's on the softer side of the spectrum in that scene, कि अपने लिए ले रही है चीजें, while Nisha is on that road of कि Rahul, my friend, I love this man. Two different contrasts of character and their personality and how they proceed. It cuts into the Valentine's Day night. They have that party, and so Nisha's in that blue dress and they're talking. And Rahul's like, I'm bored, ghar chalo. She's like, itne sare log hain, they're all in love, ye dekho. And Rahul makes a very funny comment. He's like, agle saal isi party mein in logo tum alag alag mein dekho. Yes, 100%. Another amazing dialogue was, तो पूरी जिंदगी आप मेरे जैसे लड़के के साथ गुजार सकती है. And before she answered, the friends take him, and then Priya, what does she say? She says, haan, guzar sakti hu. And then it cuts into the song, and that song is beautiful in itself. Nisha left the party, and Rahul's like calling her ki, and kahan ho, because in the beginning she was like ki sabke saath aayenge, sabke saath hi jayenge, we're not leaving this party because you're bored. Somehow he dials Pooja. So it shows you that Bollywoodness of movies, right? It's meant to be, connections हो रहे हैं. एक सेकंड में पूजा को फोन जाता है, एंड पूजा ने पहले ही कहा हुआ था कि 12 बजे मैं अपने जो मेरे लिए बना है उसको देख पाऊंगी. तो वो उसकी whistle आती है. She sees him, she looks at the clock, she looks at the moon, and she's like so happy.
कितनी सिंपलिस्टिक खुशियां थी पूजा की लाइफ में. एंड प्रिया, यू मेंशन कि निशा is a go-getter. She knows कि हाँ, I can live with you, I can spend my whole life with you, but she doesn't have the ability yet to come out in the open, क्योंकि शायद उसको लगता है कि राहुल तो मेरा ही है, मेरे साथ ही है ये, you know. Okay, एक सेकेंड, इतना अमेजिंग रूम जिसमें कोई जाली जूली कुछ नहीं है, मच्छर स्टूडियो रूम कोई कुछ नहीं है, ऐसी विंड आ रही है और वो वहां वाइट नाइटी में वो नाच रही है. Yeah. And then Priya, you mentioned in the beginning that you love that heart, you know, the red balloon that comes, and then इस गाने में चांद ने कुछ कहा, उसमें भी इतने balloons हैं, and the imagery देखो, शाहरुख वहां बैठा है, he's playing the guitar, निशा वहां से आ रही है, and जो hearts balloons है on the floor, they make a wall in front of between them, and she's trying to walk through them कि जिस पे हम मर मिटे. That was her favorite line. And then cut to वहां पूजा अकेले नाच रही है, पता नहीं कहीं से रेड बलून आ जाता है उसके पास, दिल आ जाता है. It shows you foreshadowing कि क्या होने वाला है. स्क्रीन प्ले था यश चोपड़ा का, जो डायरेक्शन था, it completely did justice to each character. And एक कैरेक्टर जो मूवी में था, अक्षय कुमार, वो कहाँ से आता है, वो भी अब बेस्ट फ्रेंड है पूजा का. जैसे निशा और राहुल है, वैसे पूजा और अजय है. ये अंकल आंटी का लड़का है जो बाहर रहता है काम की वजह से, वो वक्त निकाल के आता है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके जाता है बाहर, वो घूमते फिरते हैं. द आइकॉनिक दिल तो पागल है गाना बजता है. वहां अजय एंड पूजा आर एंजॉयिंग इन थीम पार्क्स, वहां राहुल एंड निशा आर एंजॉयिंग द पूल एंड राइडिंग देयर बाइक, है ना. तो उनकी केमिस्ट्री दिख रही है कि कितनी अच्छी दोस्ती है दोनों की, है ना, कनेक्शन कितना अच्छा है. एंड देन यू सी द हंसी मजाक ऑफ पूजा एंड अजय. ही पिक्स ऑन हर, मोटी तू ठहर जा, अच्छी शॉपिंग कराऊंगा मैं तेरी, बिकॉज वो नाक में मारती है कि देख लो, है ना. पिवटल सीन व्हेन अजय प्रपोजेस टू हर. मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया था कि मैं जान सकूं कि how I feel about you, do you feel like that? And वहाँ her conversation with her friend is ringing कि एक ना एक दिन कोई आएगा जिससे मैं प्यार करूंगी, जो मेरे लिए बना होगा. और उसकी फ्रेंड ने कहा था कि what if that person's already there? What if that person, when are you gonna grow up? ये हम बच्चे नहीं रहे. And वहाँ सोचते सोचते वहाँ रह जाती है. So then we obviously see Rahul and Pooja come together for the first time, जहां आमने सामने उनकी बात होती है. The epic line came. Rahul, नाम तो सुना होगा. And Madhuri was like, नहीं. I was like, I love it. जब वो आमने सामने आते हैं, काम करने आते हैं, the way he gets frustrated, the way she's not getting the vibe of it, it was beautiful. ताकि हमें organic लगे. वो ब्यूटी थी उस स्क्रीन प्ले की, जिस तरीके से वो उसको समझाता है, फिर करके बताता है. एंड देन जब उसको माया का कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है, और वो अपने आप को, वो जो उसको हिट करती है चीज, हर सोल जस्ट गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड शी मूव्स टू द डांस फ्लोर एंड शी डैश्ड हर हैट आउट. वहां पे नजर आता है कि नो, दिस इज माया. पूजा इज बिकमिंग माया एंड नो, पूजा इज माया. वो जब लड़ रहा था, पूजा के चेहरे पे वो जो शॉक, किसी ने कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की, और वो कहता माया माया माया, वो कहती पूजा, पूजा नाम है मेरा. कब वो पूजा से माया बन जाती है किसी को पता ही नहीं चलता. इट सीम्स लाइक इट्स द सेम पर्सन. वो जैसे नाचती है सबके सामने और वो जैसे बैठ के देखता है. एंड उसके बाद जो मोन्टाज आता है कि days are going by and they're happy, they're connecting, they're flirting a little bit, it was really cute. Nisha comes to know now कि okay, Maya is there, तो she's like, हाँ लेकिन मेरे साथ डांस तो नहीं करती होगी ना. And she's having her Chinese. Rahul being the best friend, Chinese भी लेके आ रहा है, सुना भी रहा है कि तुझे नहीं पता, वही मेरी माया है. And she's like, अच्छा, मेरे से अच्छी डांसर तो नहीं ना, मैं बेस्ट डाउन ना. एंड दैट मोमेंट वो फ्रेंडशिप में नजर आती है, वो इनसिक्योरिटी हमें नजर आना शुरू होगी. बिकॉज आई रिमेम्बर दिस ड्रंक सीन ऑफ हर बर्थडे, जहां पे शी इज लाइक, राहुल आई लव यू, एंड देन शी एक्सप्रेसेस इट, नशे में हूं जो भी हूं, बट प्यार तुझसे करती हूँ. और यहाँ पे फिर चक धूम धूम, चक धूम धूम, वो गाना भी आता है. माधुरी का ब्लू सूट, it's raining like crazy. वहाँ शाहरुख नाच रहा है, माधुरी नाच रही है, बच्चे हैं चारों तरफ. I was like, damn, we love dancing in the rain.
is there a more amazing song like Dancing in the Rain? So much fun. Chak Dum Tum, I think, is a fun number. I agree, right? You think about Dancing in the Rain, carefree. So it's such a good song. It has the play in the words, like Hati Jaisi Doom. Like, it's just a fun, playful song. So and it starts off with kids and just Pooja and Rahul dancing, cuts into in the hospital, and they blindfold Nisha, and she's in the wheelchair, and they're pulling her out. And all of a sudden, it's their whole troupe. And then it's them two dancing, Rahul and once again, Pooja. They're dancing, and that's her first visual of, okay, this is Maya. And then you see that trio for the first time kind of together. Face. And everyone's dancing. Everyone had their moment, right? And in the end, the doctors are coming out and like, okay, bye, bye, bye. So Shah Rukh kind of grabs Madhuri and runs away, and she's like kind of dancing to her chair. And the next one that I remember most vividly is that dance-off scene. Dance of Envy. Yeah, Dance of Envy. So when Nisha comes in, she can see that Pooja's rehearsing, and she's wearing a very iconic, it was blue and black, tight, short outfit, athletic outfit. And Pooja is all black, headband on, hair out. You can see a contrast once again in the characters, right? Both strong women, both beautiful women, but their appearances are very, very different. Nisha comes and joins in, and she's doing the choreography that's planned, and they're doing it, and all of a sudden it goes dun, 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 dun. Yeah. And then all of a sudden it goes dun, tiki, dun, dun, dun. I love and that. No, but even before that, the imagery was amazing because Pooja center stage mein hoti hai with all these dancers around her, and wo kar rahi hai. Yeah, it was like, and then I was like, so pretty. Then you see Nisha coming. And Nisha is in full mood. And Nisha, she's in full mood. Like, what is this biatch doing in my jagah? This is my place. She cannot be there. ये है कौन है ना? वो माधुरी अपनी धुन में वो नाच रही है, गा रही है. Karishma's like, I've had enough. वो कैसे अपनी जैकेट अनजिप करके जाती है, वो दोनों एक दूसरे को साइज अप करते हैं, देखते हैं. एंड देन ये तो चलो हिंदी मूवी का मैजिक कि ऑल ऑफ अ सडन निशा को सपना आता है कि ये कोरियोग्राफी है तो हमने ये साथ में करनी है, वो करते हैं. एंड देन जो उनका फेस ऑफ शुरू होता है कि देयर डूइंग इट, वहां राहुल देख रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि राहुल को पता है ये जेलसी दिखा रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा. एंड पूजा जो है वो पहले नाच रही है, फिर देखती है कि शी इज हर्ट, शी इज ब्लीडिंग. हाँ, तो फिर वो नाचना बंद कर देती है. पर निशा वो भी अपनी दुनिया में खोई हुई है. शी इज इन दिस लाइक जेलसी, इनसिक्योरिटी, गुस्सा जो भी है, वो नाच रही है, घूम 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 के आती है. वो एंड में वो राहुल के ऊपर ऐसे गिर जाती है, राइट. एंड देन यू सी कि वहां पूजा खड़ी होके अप्रिशिएट कर रही है, पर ऑब्वियसली उसको भी लगा है कि व्हाट वाज दैट. राहुल इज लाइक व्हाट वाज शी डूइंग. एंड निशा ऑब्वियसली इसने ये किया, लेकिन उसको भी पता है कि मैंने अच्छा नहीं किया जो भी किया. और उसके बाद जैसे वो मिलते हैं, वो उनकी बात होती है कि राहुल, मैं वहां उस दिन इतनी भी बेहोश नहीं थी जो अपने दिल की बात ना समझ पाती. प्रॉब्लम ये है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू किसी और से प्यार करता है, राइट. एंड एट दिस पॉइंट ही डजंट इवन नो ही लव्स पूजा. थोड़ा बहुत वो बटरफ्लाईज वो फील करता है वो, लेकिन वो जो सीन था ना बाय द लेक, भगवान को कोसती है कि तुम बुरे हो, मैं बुरी नहीं हो, तुम बुरे हो, मैं बुरी नहीं हो. वो पत्थर फेंक रही है, राहुल सॉरी कह रहा है, वो कहती राहुल तुम सॉरी मत बोलो, मैं रो पड़ूंगी. वो फिर से सॉरी कहता है, राहुल तुम सॉरी मत बोलो, मैं रो पड़ूंगी. एंड देन वो कैसे रोती है एंड वो कैसे एक दूसरे को मिलते हैं. ओह माय गॉड, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज they obviously love each other, they obviously care about each other, लेकिन one person left it at friendship कि you are my buddy, and one person took it as you are my buddy but you can also be my life partner. तो वो जब relationship अब match नहीं होती ना, that can be devastating for a relationship because you don't know where the future is now. जब Dance of Envy आया था ना, I'm like it's a complete storytelling in itself. एक replacement आ चुकी है जो main character हो चुकी है, and now she is sidelined और उसको ये लग रहा है कि yes it's मेरी जगह. जब राहुल आता है ना उस मोमेंट के अंदर, he got it कि she is envious, he got it कि अब इसको प्रॉब्लम हो गई है. उसके एक्सप्रेशन से पता चल गया था. बाद में वो जब दिखा रही कि मैं बुरी नहीं हूँ, तुम बुरे हो, क्योंकि she is so helpless कि she has nobody to blame because she exposed her love and she faced her biggest fear
कि he doesn't love me back. You can't control your feelings, you can't control what your heart wants, and when you don't get it in return तो दुख तो होता है. And it was really hard for her क्योंकि वो सोचती थी कि मैं जाऊंगी ना इसको छोड़ के, ये इसको कदर होगी तब मेरी, इसको भी पता चलेगा कि ये मुझसे प्यार करता है. And the thing is कि हमको पता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. जो पूजा राहुल की जर्नी है वो कैसे घूमने भी जाते हैं खंडाला उसकी ताई के पास, एंड वहां पे Aruna Irani, she was fabulous there as that kadak but loving teacher जो dancer है. And she was like, पूजा मैंने बचपन से तुझे देखा है, तू दूसरों की फीलिंग्स अपने ऊपर रखती है, and I've always loved that. लेकिन आज वही बात मुझे बहुत चुभी है. Why are you suffocating your dreams? Why are you not allowing yourself to feel for this man that clearly you're in love with and he's in love with you? तू डर मत, तू अपने फ्यूचर के बारे में इतना मत सोच. Live. तू क्यों रुकी वहां? अगर तुझे अजय से प्यार नहीं था, why are you doing this for yourself? Basically कि उस फ्यूचर के बारे में भी तो सोच. It's so easy to make a decision in the present, but you have to live with it for the rest of your life. So please think about it. And I love वो जो wedding का scene आता है ना, when the wedding festivities are going on. अच्छा तुझे तेरा life partner मिल गया है, and it's a shock to Rahul कि ये कहाँ से क्या हो गया. एंड वो उसको बता रही है, एंड वो घबरा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, रबड़ी खानी है, रबड़ी में कुछ गड़बड़ है, ये सब चल रहा है. एंड देन माय फेवरेट सीन इन द होल मूवी, चूड़ी, मेरी चूड़ी कहाँ है? राहुल तूने मेरी चूड़ी देखी? एंड ही गोज and she sees the chudi, she goes, Rahul ये क्या बचपना है? And he comes and she grabs her, or pass. My childhood heart and then my teenage heart when I grew up, I was dying. I was like, damn, this is hard. I was having my heart in my mouth. What the hell is happening? I was like, what is happening? The chemistry was insane. वो कैसे नजदीक आता है, वो कैसे माधुरी का जो दिल धड़क रहा है, जो सांसें ले रही है. I was like, holy shit, what is happening? And then they go into a dream sequence which was killer, and then she wakes up. और कैसे वो वहां से भागती है. I was like, oh shit, something is going down. Pooja runs away. They go cut into once again rehearsing for their drama. Yes. And it becomes almost like they're mirroring what they're personally feeling between each other, and now it's all in front of them, and you can feel the tension. Yes. They were so good. They were so good. मुझे घबराहट हो रही थी उस सीन मुझे घबराहट हो रही थी. What the hell is happening? They're talking, right? कि तुमने मेरा phone नहीं उठाया, and they're going back and forth. And in the back, you see Nisha comes back because she had left. Oof. You know, and you see her in the back, and just like in the envy sequence, and Rahul knew that this is something else. Yeah. When she's hearing the dialogue between Rahul and Pooja, she knew this is not just dialogue. This is a real thing happening between them. Her smile, her khushi turns into like silence. And वो जहाँ वो chemistry की बात करो ना, please look at this scene from Shah Rukh and Madhuri कि जब मैं तुझे छूता हूँ कुछ नहीं होता, she goes कुछ नहीं होता. मैं जब करीब आता हूँ कुछ नहीं होता. जब मैं जाता हूँ तो मुड़ के नहीं देखती. Oh my God, तू प्यार नहीं करती. It was so magical. So magical. कैसे वो hug करते हैं, उसके बाद में they're lost in their own world, and then people start applauding. And there's a clap. Everybody thinks, oh, such brilliant acting, but you could see Nisha knew. And then comes the Ajay Saab. Ajay Saab आके शादी announce कर देते हैं. And I was like, okay, reality check. What is happening? ऊपर से Nisha is witnessing that, and she held Rahul's hand. She is like, this is happening to me. Like, it is happening to you. And I can't. Right? She's already felt that rejection of that kind of love. Yeah. And now she's like, I'm happy कि तू खुश रह, right? अपनी जिंदगी में खुश रहो. And all of a sudden his heart's breaking. Yeah. In front of everyone. कैसे उसको देखता है और हंसता है और जाता है अजय पूजा के पास कि हम तो congratulations, हम तो भूल ही गए, हंसते खेलते हैं कि पूजा की भी अपनी लाइफ है, अपने वादे हैं, अपने रिश्ते हैं. My heart was breaking कि कैसे वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है. और उसके बाद she leaves with him, and then कैसे वो गुस्से में कहता है लाइटिंग ठीक करो, रिहर्सल करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे ये वो, एंड ही इज लिटरली इन पेन. और वहां माधुरी वापस आती है और ऐसे हाथ रखती है, वो देखता है उसको, एंड देन ही रियलाइजेस वो अपना पर्स लेने आई है. शी डिडंट कम बैक फॉर हिम. फिर से हार्ट ब्रेक.
so beautifully and done. Kirti, in that entire scene, the way even Nisha is responding, she wasn't a furniture. Nope. She is also breaking. I went through it. He's going through it. Yeah. Everything is breaking, Yes. and that is the beauty of the love and Yes. friendship. Yes. You have this empathy, and kudos to the writing and the screenplay. It was so tight. कि Yes. आप इतने invest हो चुके होते that you are emoting that emotion while witnessing the beauty of it. और फिर climax जो आता है, जहाँ पे वो थिएटर से फिल्म स्टार्ट हुई थी, थिएटर पे एंड होने लगी है, Maya is on the stage now. Yes. What a montage! What a beauty! A montage! Acting, dancing, it was beautiful. उनकी टेंशन जो चल रही है, वो montage से पहले वो मूर्ति शाहरुख के हाथ में होती है, वो मूर्ति देख के वो रो रहा है, he's holding गणपति in his hand कि प्लीज कोई चमत्कार हो जाए. वहां कट टू पूजा अपने ड्रेसिंग रूम में है, गणपति की मूर्ति उसके सामने है, वो देख के रो रही है कि मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि इस शो के बाद तुरंत ही उनकी शादी है, अजय और पूजा की. So this is like the last time she's gonna be with the man she loves, and so she's pouring her heart into it. Wahan Nisha, she's trying her best कि पूजा समझ जाए कि सब इतने किस्मत वाले नहीं होते कि जिनसे प्यार करो वो मिले, तो तुझे ये प्यार मिल रहा है तो क्यों ठुकरा रही है. And she's just like, in her own lane कि I have to do this, I have to do this. The heartbreaking thing was, the गाना जहाँ निशा इंजर होती है, वही गाना शाहरुख वहां होता है, वो ड्रम्स प्ले कर रहा है, and he just unleashes. And then you see a scene where Madhuri is doing the Dance of Envy song, and side में राहुल उसको देख रहा है. That look he has, that longing, and निशा उसको देख रही है, and फिर वो कहता दिल तो पागल है, मानता ही नहीं. Oh my God, I was dying throughout this whole sequence. मुझे इतना रोना आ रहा था, इतनी टेंशन थी. And then when all of a sudden जब वो आता है, वो pivotal scene, माधुरी black में, वो black में, उनका कुछ इंटरनल चल रहा है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रही है, और एंड लोग आर लाइक व्हाट इज हैपनिंग, और वो उसको बार बार पूछ रहा है कि ये है प्यार है, वो है, ये है, फिर कहता है राहुल, नाम तो याद रहेगा ना. He changed the entire narrative. He walks off stage and Madhuri is just crying, and then the audio plays of the tape. No, right? That was that tape. I miss tape recorders now. I miss tape recorders. This movie was so beautiful. And Ajay, हम कह रहे हैं ना कि निशा ने अपनी दोस्ती दिखाई by taking care of her friend Rahul. वहाँ अजय कह रहा है पूजा को कि तू पागल है. And he's doing like this, and he's like, he goes, "Whoa, you, wow, you, wow." And then he goes, "You go there, bring him, put him in a hug." I was like, "Oh my God!" And the way she gets that strength, character, Then gave her the strength to let go of the friendship and go after your love. And then, of course, she starts with the dialogue. जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ right? I think that's the sentiment that every girl wants from her boyfriend, husband, significant other, male or female. My significant other thinks I'm the most beautiful on the earth. And I remember that dialogue. She said a bunch of things. She said, और जब वो प्यार करता है तो आंख भर आती है. And I was like, oh my God. नहीं, और जब वो हंसता है, मन करता है मैं झूम उठूं. And so that end of that embrace, you see like Nisha crying and like thanking God, and the auntie uncle are in the audience and they stand up. They're happy for. So basically यही दिखाते हैं ना कि आपको लगता है कि जब आपके लिए कोई कुछ करता है, yes, you should be thankful. Yes, you love them and care for them, but not at the expense of your own future, your own life. And ये भी दिखाते हैं कि जो वो लोग हैं, your loved ones, your relatives, your friends, they will support you and they will love you no matter what. There was no toxicity in this movie whatsoever. This was really a feminist movie. A girl had her awakening. She realizes that I can live my life. I can be with the man I want. The guy she was engaged to, the guy she was going to marry, and he is supportive. He's like, no, I'm your friend. You love him. You get your love. तो ऐसे supportive लोग भी होते हैं लाइफ में, और वो इस मूवी में दिखा. And it was just an amazing experience as a kid, क्योंकि आपको फिर लगता है ना कि relationships are so nice. They're beautiful. ये अलग बात है कि ड्रामे भी होते हैं as you get older. But as a child watching this movie, I just was in love with it.
मैं आज भी अगर बैठूं, I love every moment of it. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता इस मूवी में कि हाँ ये चेंज होना चाहिए था, वो चेंज होना चाहिए था, because I feel it flows. हर एक गाना फ्लो करता है, montages आते हैं, उनकी स्टोरी दिखती है, the real characters and the play characters. शाहरुख was on the top of his game in the 90s. शाहरुख से कोई पॉपुलर एक्टर नहीं था. शाहरुख ने दिखाया why he was the lover boy, why he was the romantic hero. King of romance. करिश्मा ने दिखाया that this is a up and coming star. जैसे राजा हिंदुस्तानी में she launched, and then this movie, because it was offered to other women, उन्होंने नहीं लिया ये रोल. And Nisha, करिश्मा ने ये रोल लिया because she wasn't scared कि माधुरी है मेरे opposite. क्योंकि माधुरी का चलो character had more footage, but Nisha, every single time Karishma was in frame, she owned it. And then obviously Madhuri मेरे लिए तो grace and elegance की देवी है. Goddess. She was so beautiful inside and out, and her acting in this movie was amazing. उसके suits इतने amazing थे, her styling was so beautiful. And मुझे लगा इसके बाद कि हाय माधुरी और शाहरुख को पता नहीं हर एक मूवी इकट्ठे में आनी चाहिए इनकी, you know, ऐसा हुआ नहीं. But I just would have loved to see this Madhuri Shahrukh jodi again and again and again. I was in love with them. They ended on a very good note. Ajay and Nisha, the ones who have had their heart broken, their love is now with someone else. He's asking her, what's your name? And she goes, Nisha. And he goes, oh, Nisha, shadi hogi aapki. And she's right? like, so it puts that on so it ends on a little bit of a positive note कि जिनके दिल दुखे हैं and they're broken now. They also have a future. They can also future उनका भी हो. Friendship की value बहुत दिखाई हुई है इस movie में, and I think it also shows you somewhat what friend zoning looks like in the 90s, right? That Rahul is a clear example of friend zoning, right? He's like, this is my friend, वो कहती मैं इससे प्यार करती हूँ, and it shows you so many other relationships. In the movie, they also showed a scene where Frida Jalal's coming when she finds out that, oh, she stood there at the airport, right? And they're like, oh, you're going to be ghar ki bahu. So it shows you value, and Madhuri's listening to it and holds it to heart. Ki these people took me in. Mere mummy daddy ke accident ho gaya tha, they died. So it shows you what mother-father relationships are like, even if they're not your blood mother-father. It shows love in so many different spectrums, not just that stereotypical romance between a male and a female. और मेरे लिए ये इसलिए ज्यादा fascinating होगी क्योंकि first time Yash Chopra ji hired Madhuri Dixit. She's a great actress. And that too, Karisma working with him for the first time. They both are working with each other for the first time. Yes. And Karisma sharing space with such diggaj like Shah Rukh and Madhuri, जिनको वो कहती थी हमेशा जी के they are my idols. और वहां पे ऐसी परफॉर्मेंस देनी, हर एक ने अपनी छाप छोड़ी. like कीर्ति said, निशा के जितने सीन्स थे, she made sure कि I made my presence felt. माधुरी शोर के एक दीवा क्या होती है, द ethereal beauty. क्योंकि मुझे लगता है वो जो ढोलना वाला गाना भी था ना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना, वो स्टाइलिंग रानी मुखर्जी पे, वो स्टाइलिंग प्रीति जिंटा पे, गाने गाने हम देखिए. इवन कुछ कुछ होता है में that Rani Mukherjee was totally replica of मेरे मतलब ढोलना सॉन्ग. जो स्टाइलिंग थी simplistic थी, चमक धमक नहीं था, but it was so sexy. Those sarees, those lehenga cholis she was wearing, and अरे हम कह रहे थे ना कि Karishma had that blue jumper. She also wore a blue jumper and she looked amazing. जो Karishma की स्टाइलिंग थी, she was trendy. Beat her sportswear in the dance of envy, beat her भोली सी सूरत. Every outfit was a gem. चाहे वो cinematography हो, चाहे art direction हो, चाहे वो आप choreography हो, music हो, every song is a gem. हम तीनों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद है. हम बार बार ये मूवी देख सकते हैं. हमको हर एक डायलॉग, सीन, एवरीथिंग याद है इस मूवी का. तो अगर हमारी सुनोगे तो प्लीज, if you haven't seen this movie, you need to go watch it right now. It's a classic from the 90s. And also, guys, I hope you're liking our retro night videos. हमने पहले गुप्त की थी, अब हम दिल तो पागल है कर रहे हैं. And give us your suggestions for which other movie we should visit for retro night. And also follow us on social media. I am Puri602. Odie is Odis_Insta18. Please like, comment, share, and subscribe. And we will see you next time. Bye. दिल का कहना हम सब माने, दिल ना किसी की माने, जान भी हम ये जान गए सब
एक वो ही न जाने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल दीवाना दिल है, तो पागल है, दिल तो पागल है, पागल हाँ है। ये पागल है, हाँ दीवाना है।